informed there's fresh information coming in there because of dense fog that continues across the national capital region. Palam has recorded the lowest visibility at 350 meters, while Satyajang saw visibility drop to 200 meters. Moderate to dense fog continues at both stations over the past 24 hours. Meanwhile, Delhi has witnessed a sharp fall in temperatures, with minimum dipping by 1 to 3 degrees Celsius, maximum dropping by 4 to 6 degrees. The India Meteorological Department has said that the minimum temperatures range between 6 and 8 degrees Celsius, while maximum remains between 18 and 20 degrees Celsius. Coming back to you, Arzu, about the situation on the ground, the temperatures have dipped, the wind speeds have weakened as per the Indian Meteorological Department, combined with the poor air quality index. It's a lethal mix, causing a number of respiratory diseases to spread across the national capital. The traffic has slowed down. We are seeing problems arising because of the logjam at the International Indira Gandhi Airport. Talking about a number of flights that have been delayed, several others that have been cancelled. Do you think there is going to be respite seen in the next few days or weeks? Well, indeed, Megha, if we talk about the situation, it's very much, alarming, and also there is no such expectations that in the coming days also the things are going to improve, because the weather conditions that are prevailing, and also, in fact, Environment Minister himself signaled that in the coming day the western disturbance is going to, make the weather worsen in national capital. Also, if we talk about the visibility also, as we can see clearly at this place also, where there is a lot of vehicular movement, here also the visibility is down because there is a smog that is prevailing, that has blanketed the entire area, and especially at the outer place also, the outer areas also, there is a lot of smog that is being witnessed. Also, the Parliament reported the lowest visibility of 350 meters, since the morning, and while Safdarjung recorded visibility as low as 200 meters since the morning. So definitely moderate to dense fog, persisted at both these stations over the past 24 hours, and not only at these stations, but also if we talk about the India Gate area, at the several places in the national capital, the visibility has gone down, the speed of the vehicles have gone down. Also would like to show you the visuals around. All right. This is the night time, the headlights are on, but during the while there are fewer vehicles that we can see on the ground, it is not as congested as the Lajpat Nagar road is on a usual basis, but the air is filled with thick smog alongside the fog that has worsened the situation. We are getting to know now that the Delhi air quality has deteriorated further. The city has recorded an overall air quality index of 384, placing it in the very poor category according to the Central Pollution Control Board. This marked a deterioration from Friday, when the air quality index stood at 374 in the afternoon. Several parts of the capital, including Anand Vihar, Chandni Chowk, Dwarka Sector 8 and Jahangir Puri, slipped into the severe category, with AQI levels crossing 400. Vivek Vihar reported the worst pollution levels with an AQI of 434, followed closely by Anand Vihar at 430. At one point, there were 14 stations that slipped into the severe category before marginal improvement was seen later in the day. Coming back to my reporters, I'm going to quickly get in Anil. And Anil, यहाँ पर अगर बात करें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल जो हमें पता चल रहा है पोल्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा कि 384 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी है, पर अगर हम रियल टर्म्स में देखें, इस समय दिन खत्म हो गया है, रात के 7 बज चुके हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल 400 क्रॉस कर चुकी है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है, और काफ़ी सारे रीजन्स दिल्ली के अंदर जो कि 450 460 लेवल के ऊपर जा चुके हैं। इस सिचुएशन में क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता है और शाम होते ही
सभी लोग अपने अपने काम से जो है घर की तरफ लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। ये वजह भी एक कही जा रही है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है गाड़ियों का, तो पोल्यूशन जो है फैलने लगता है। तो जैसे जैसे गाड़ियां सड़कों पर होती हैं, पर वैसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं लगातार पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। BS4 और BS3 के वाहनों को वापस भेजा जा रहा है यूपी के अंदर ही। और साथ ही एनवायरमेंट जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं वो विशेष अपना ध्यान रखें, वो अपने नियम का ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब टीम गठित की जा रही है और वो इसी चीज पर काम करेगी। और साथ ही जिस भी प्लॉट में या जिसमें भी वो कंपनी चल रही होगी, तो उस जमीन पर भी जो है सख्त कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि एनवायरमेंटल जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से सख्त ये निर्देश दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है जितने भी कारखाने, फैक्ट्री या जो कंपनी चल रही हैं वो BS4 और साथ ही मैं आपको बता दूं जितनी भी तमाम चीजें हैं जो कि ग्रेफ 4 के नियम के हिसाब से जो चलनी चाहिए उसके हिसाब से ही वो रखें, और रियल टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें। All right, क्योंकि all right, किस all तरीके right. की- Anil, जी।